I have been working on listening for last 15 years and I have only progressed about 1 mark in the scale of 10. I have my so-called tags available, written statements available on my dining table, on my table. Listen, 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 listen. I think I can show you in case you are able to see it. Silence and listen. Believe me that this is one quality leader has to develop, which has no end. And if you listen to the words, if you listen to the tone, if you listen to what is not said, you will get so much of input, unbelievable input. तो आज को मैं थोड़ा सा लिसनिंग के बारे में थोड़ी सी साइंटिफिक और हमारे ग्रंथों में इसके बारे में क्या बात की है, क्योंकि भारत देश ऋषियों मुनियों का देश रहा है। आपको हैरानी होगी कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन करने से मनाही की गई थी और कुछ हद तक बिल्कुल सही है कि डॉक्यूमेंटेशन कैन नॉट कैप्चर द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जो है राइटिंग, जो कि हम एम्फसाइज करते हैं, उसकी अपनी यूटिलिटी है, पर ऋषियों मुनियों में सब कुछ बोला और सुना है, तो सुनने पर बड़ा ध्यान दिया गया है। Because listening comes by listening means you are actually using your ears. But you are not only using your ears, because ears only contribute 40% of what is being communicated. 60% is from the body. And the body का मतलब है, शरीर नहीं बोलता है, शरीर के अंदर के भाव बोलते हैं। तो भाव 60% जो होता है, जिसका मीनिंग अंदर बोलने वाले को मालूम होता है, और अगर आप पढ़ सकें तो यू विल टेक लेस रॉन्ग डिसीजंस और यू विल टेक मोर राइट डिसीजंस, एंड दैट डजंट हैपन। जैसा कि आकाश ने कहा कि मैं सुनता नहीं हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं सुनता नहीं हूं, तो somebody starts working on the quality. And I'm talking about listening. गुरु ग्रंथ साहब में इसके ऊपर कम से कम 16, 15, 20 शायद ज्यादा होंगे पौड़ियां हैं। उसमें सुनिए 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 के ऊपर है। तो वाई गुरु नानक इज एम्फसाइजिंग ऑन सुनिए, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। So I recently went into details and I found सुनिए लागे सहज ध्यानु, बहुत गहरे में उसने सारी दुनिया को समेट लिया है एक लाइन में। सुनिए, अगर सुनोगे, लागे सहज ध्यानु, इसका मतलब आपका ध्यान बहुत सहजता से लग सकता है। ध्यान का मतलब ये हुआ, यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज थॉटलेसनेस, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू रीच a state that even you don't exist and you don't know what it is, that is ध्यान, समाधि, बहुत सारे शब्द हैं उसके। तो गुरु नानक लिख के गए हैं कई साल पहले कि सुनिए लागे सहज ध्यानु, अगर आप सुनेंगे तो आपका ध्यान सहजता से लगेगा। इट मीन्स यू विल रीच ए मेडिटेटिव स्टेज वेरी सिंपली। Why meditative state? Again, go back to ILEAD, an introduction session. I keep saying activity, productivity, and creativity. We are almost all engaged in activity mode. It is not productivity. Therefore, we don't get results which we deserve and which our hard work, so-called hard work, deserves. हमारे हार्ड वर्क की डेफिनेशन को थोड़ी एरोनियस है। हम हार्ड वर्क उसको बोलते हैं जिसमें घंटे ज्यादा लगते हैं। जी नहीं, हार्ड वर्क वो नहीं है, वो तो घंटे वर्क है। बट प्रश्न ये है कि वी आर एंगेज्ड इन हार्ड वर्क, कैन वी बी स्मार्ट वर्कर्स? तो सहज ध्यानु, जब एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी मोड की जब मैं बात करता हूं, उसमें मैं यही बोलता हूं कि क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उनकी पढ़ी है, और कहीं सूक्ष्मतया उनका मेंशन ये है कि उनको भी मालूम नहीं है कि वो सफल कैसे हुए। आज तुम तो उनके बारे में किताबें लिख रहे हो, लेकिन उनको भी पता नहीं है। तो वो कैसी चीज है जो उनको भी पता नहीं है, हो रहा है।
It means there is something which is happening which one is not aware of. And that is what I say, that super conscious Paramatma जिसको बोलते हो, जो भी नाम देना हो दे दो, that power which you are also a part of, that power is aligned. If your power is aligned to the super conscious power, you are in a creative mode. आप देखेंगे तो मेजर इन्वेंशंस उस मोड में हुई हैं, क्रिएटिविटी मोड में. आर्किमिडीज तो बहुत टाइम से जूझ रहा था, क्योंकि महाराज ने एक सोने का हार बनवाया था और बोला था कि तुम इसको बिना तोड़े ढूंढ के लाओ कि इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है. एंड ही वाज स्ट्रगलिंग कि कैसे बिना तोड़े पता लगाऊं कि सोना कितना है. एंड सडनली वन डे, it's a story, one day he went into a tub to take bath and the water came out and he started running. He came out of the bathroom, दौड़ा हुआ, नंगा दौड़ा हुआ गया और राजमहल की तरफ गया और बोलता गया, यूरेका यूरेका यूरेका, मतलब मिल गया, मुझको सूत्र मिल गया. So these are the states. Now these states, if you want to achieve for so-called Fortune 500 company membership, then as owners of the business you have to reach there. And listening is that step which can take you there. Now listening is not a simple quality. Believe me, when you work on that. And I had read about it, I had written about it, I have thought about it, but I did not practice till the time I went to Paris. Me and my wife, I took some money out from the bank, pushed that into a purse into my back pocket, wore a jacket which was very tight. Even if somebody wants to pull my jacket, it was very difficult, and I was assured nothing will happen. And I was waiting at all stations, traffic, metro stations, that डब्बे में जब बिल्कुल भीड़ नहीं हो तब चढ़ेंगे. And in such a train, I just entered the apartment. But before that, when I was searching कि कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, a man walking at a distance of 5 feet came back to me and said, इंडिया से आए हो? I said, yes. आपको कैसे पता लगा? मैंने नहीं, आपको देखने से लगा कि आप इंडिया, पाकिस्तान वगैरह उधर से आए. मैंने कहा हाँ, इंडिया से आया. बोला भाई एक चीज का ध्यान रखना, अपने पर्स का बहुत ध्यान रखना पेरिस में. तो मैंने बोला ओके, और मन में सोचा कि यार पर्स तो मैंने बहुत अच्छी तरह टाइट रखा हुआ है, उसके ऊपर जैकेट है जिसको फाड़ना पड़ेगा अगर उसको निकालना पड़ेगा. मैंने इसकी बात को अनसुना कर दिया. This fellow walked away about 10 feet and came back. Tall chap, I can see his figure today also. He came back और मुझसे बोला, मेरी बात ध्यान से सुनी, आप यहाँ पेरिस में अपने पर्स को बड़ा ध्यान में रखना. तो मैंने मन में कहा यार सुन लिया ना बॉस, एक बार बोला तो मैंने सुन लिया. And he went away, and that day I lost that purse because in a dramatic move, a boy fell on my feet, caught my feet. There was another person probably behind him who pulled my jacket, and I was struggling with the feet, and before I or my wife could notice, I had lost money. That is the day I said, when I confirmed to myself that God sends you signals. Are you listening? एंड लीडरशिप की क्वालिटी में अगर बहुत ज्यादा गहरे में स्टडी करोगे तो सबसे बड़ी क्वालिटी लर्निंग के अंदर वो है कि आर यू लिसनिंग. Now, listening therefore becomes a topic of discussion, and therefore it is not only topic of discussion but topic of practice. Believe me, हमारा खुद का टेप रिकॉर्डर अंदर इतना तेज चलता रहता है कि we don't listen. So Akash used a word called I don't listen to stupid questions. Yes, absolutely right. But who is deciding stupidity? I am deciding stupidity when I don't listen. Now, is it really stupid from the perspective of the person who is saying? No, he is raising a very intelligent question. So we are at two different perspectives. And therefore our first assumption that he is stupid or the question is stupid stops our learning. Even if he gives you motiyon ka har, you will not get it because your listening has been blocked, barrier is created, and therefore
Now you study people. You study people who have been great successes. They have been thinkers, yes, but thinking is supported by listening, a quality called listening. इसलिए ईपैड में लिसनिंग के ऊपर मैंने थोड़ा सा चर्चा तो जरूर की है कि हमको बोलना सिखाया जाता है, माँ सिखाती है, पढ़ना सिखाया जाता है, स्कूल सिखाता है, लिखना सिखाया जाता है, स्कूल और माँ सिखाती है, परंतु हमको who teaches us listening? No one. Have you attended a course on listening? No one. Not even heard of it. There are listening questions. Therefore, listening is as myriad as people are. Therefore, listening quality is as variant as probably people are. But if it is a secret to developing leadership, I think there is no other choice but to set a goal on that. To set a goal, what will you do? What one thing can you do? What one thing can you do to improve your listening? Whatever it is, it may be the best listener you think you are. So share on the chat box. तो मैं listening के लिए आज से एक काम करूँगा. Can you write on the chat box? I want to see how involved you are. Are you listening or not? Hardik Thakkar, yes, you can. What will you do? That's the question. What one thing will you do different? 5-minute on, very good. Look in the eyes, okay. Pause, wait, watch body, detach, take a pause. Ask good questions rather than, okay, listen to 1 more minute. तो कुछ ना कुछ हर इंसान कर सकता है जो भी उसकी समझ में आता है. तो leadership development, because it is very important for India that we build India, and leadership quality is required. Believe me, my statement is your organization cannot be better than you as owner. Period. If you want your organization to improve, nowhere you have to work. You have to simply work on yourself. Absolute simple place is yourself. Any problems, so-called problems, any challenges are within you. And I see day in, day out when I interact with people and I find I don't know how they live their life because problem is with them and they are saying the problem is with people. They are saying problem is the machine. They are saying problem is technology. But it is very difficult to even communicate effectively to boss problem तुम्हारे अंदर है. The moment you come to that conclusion the problem is within you, I am called tough love. Yes, I don't mind being called tough love, but I repeatedly say, if you really want to contribute to build India, contribute to your organization growth. For contributing to organizational growth, please work on yourself. Don't ever think that you know a subject well. Believe me, I have read books many times. Every time I read, ILEAD I wrote, I took 2 years and I have been doing it for about 17 years. ILEAD. And even today, when I read sometimes a chapter to discuss with participants, I realize that there is a different meaning of words. Words don't change. Therefore, हमारे ऋषियों मुनियों ने श्रुतियों पर ध्यान दिया है, बोलने पर ध्यान दिया है, सुनने पर ध्यान दिया है. क्योंकि शब्द सुना हुआ भाव भी सुन सकते हो, लिखे हुए में भाव नहीं सुन सकते हो आप. 60% कम्युनिकेशन तो लिखने में खत्म हो चुका है. आपके सिर्फ शब्द रह गए हैं. मे बी टोन को थोड़ा घुमा फिरा के लिख सकते हो, पर भाव कभी नहीं लिख सकते हो आप. इसलिए हमारे यहाँ कोई ग्रंथों का, हमारे यहाँ ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि बहुत सारे ग्रंथ बड़े हुए हैं. ऑफकोर्स वेद पुराण बाद में आए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमारा एम्फेसिस श्रुतियों का देश है. वी आर ऑल यूजिंग कथा सेड एंड कथा हर्ड. हर्ड बोलता हूँ, लिसन नहीं है वो, क्योंकि हियरिंग होता है. हियरिंग और लिसनिंग में बहुत फर्क है. लिसनिंग इज व्हेन यू हियर विद what is the intention of speaker, not your intention. What is the intention of speaker? Now that's
reading is also listening. Reading, you are reading somebody's view, but listening, it is not, because 60% is missing in reading. Therefore, listening is far more powerful. But still, you will have to start somewhere. Therefore, start reading, maybe start reading more, maybe start. Therefore, I think हमारी जो प्रथाएं गुरु शिष्य की थी उसमें ऐसा था कि experiential learning के लिए you will have to work with somebody who has experienced that. You will have to watch, you will have to look at yourself, you will have to see what is missing in you, what is not right you are doing, what is right you are doing. And unless you are listening, there is a difficulty that you will experience in growth. Therefore, I thought I should speak on that. I know that SME sector can build India. I know that if we start saying problem is not there, it is a challenge, and challenge is not outside, challenge is within it, ourselves. If you can listen to these two statements, that you can build a great organization, number one. Number two, I'm repeating at the cost of time, because listening is generally poor. And especially on Zoom, listening becomes poor because you're doing a lot of activities along with listening, so-called listening, but you're not there. Indian small and medium sector, which you are also part of, can build India. We will have to work on our organization. For that, we will have to work on ourselves. And one of the areas where you can really take a decision today is work on learning through listening. Just by listening, you can learn a lot. और जब गुरु नानक ने बोला सुनिए लागे सहज ध्यानो, तो उनका मतलब ये था कि आप अगर सुनेंगे तो सहजता से आपका ध्यान मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएंगे. सहजता का मतलब आसानी से. कैसे? Understand that because meditative state is a thoughtless state and your thoughts are the obstructions. And when you are listening to whom? Now there is in शास्त्रों में हमारे अंतर्नाद ब्रह्मनाद की बात की गई है. इसका मतलब हमारे अंदर हमारी अपनी एक परमात्मा की आवाज भी चलती रहती है. Have you heard that? I can hear it very clearly many times in a day. It is near your ears. You can listen to a humming sound. This is called dhyan. And if you reach into dhyan state, you are now connected with superconscious. And when you are connected with the powerful connectivity system of Paramatma, a lot of things will happen by yourself. You don't have to probably do anything in that. And that state is the one which these all successful people reach. Otherwise, unpad log itne bade kaam nahi kar sakte. So, any questions on listening? Take a call, work on it, maybe read about it, maybe think about it, maybe act very small, one goal. मैंने आपको अपना मेरा टेंट कार्ड दिखाया. I have written silence, listen, silence, listen. Silent and listen are anagrams. More often you are silent, more you listen, more you are silent. And if that state comes in, सहज ध्यानों की stage पे आ जाते हो, believe me, your performance will go very high and you will also not know why the hell it is going high. Experiences. Thank you very much for paying attention. I hope I have not crossed much more time. Shyam bhai, we'll take one question at least. Hardik Thakkar has raised his hand. I can have it, sir. I can have it. सर आज जो आपने बताया उसमें इन दैट कॉन्टेक्स्ट रीडिंग से बेटर इज इट गुड टू हैव ऑडियो बुक्स सुनना इज बेटर? यस, बिकॉज देयर इज अ टोन व्हिच यू कैन हियर, बट इफ यू कैन हियर ए पर्सन इन पर्सन यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज. सो खाली शब्दों के मुकाबले यूट्यूब की अगर ऑडियो सुनोगे तो आपको टोन भी पता लगेगी. अब एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉडी अगर मिसिंग है तो 60% तो मिसिंग है हमारे को. बट एनीवे यू विल बी एबल टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट नाउ देयर इज अ लिटिल डीपर सब्जेक्ट यू हैव टू गो इनटू. वी आर ऑल वन ऑर्गन प्रोमिनेंट. हमारे 5 इंद्रियां हैं. हम सब लोग जितने भी पृथ्वी पर हैं किसी एक ऑर्गन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं. सो ये हम सेल्स की
ट्रेनिंग में ज्यादा सिखाते हैं, क्योंकि सेल्स जब करने जाते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट कौन सी ज्यादा इंद्री यूज करता है, और वो मालूम पड़ जाता है. Those who use eyes, they are called visual. Those who use ears, they're different. Auditory, they are called. And there are people who experience or feel. They use skin. Therefore, major 3 कैटेगरी हैं: ऑडिटरी, विजुअल एंड कैनेस्थेटिक. आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट अगर विजुअल है और आप अगर आपकी साउंड की भाषा बोल रहे हो, ऑडिटरी की भाषा बोल रहे हो, तो उसका समझ में नहीं आएगा. You may give a lecture of 1 hour, nothing will go in. Therefore, we will have to see. If you are a visual person, reading will help you more. But understand that reading has a limitation, that you cannot understand the bhav by reading. That's the only limitation. But you will be still better off. ऑडिटरी के लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो सुन सकता है ऑडियो कैसेट्स वगैरह वगैरह, तो आपको टोन और शब्द दोनों सुनाई देंगे. बट नथिंग लाइक पर्सन टू पर्सन लिस्निंग. देयरफॉर हमारे यहाँ गुरु शिष्य की प्रथा है, पर हम तो गुरु ऐसा ढूंढते हैं जो हमारी बात सुने. हम गुरु ऐसा ढूंढते हैं जो हमको हमारे हिसाब से बता पाए. गुरु हम ऐसा ढूंढते हैं जो हमको प्रेम करे. तो ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं, होते जरूर हैं, बहुत कम होते हैं, पर वो जो पर्सनल टच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So Hardik, you will get benefit if you read, no doubt about it. Don't stop reading. Do it. If you are a visual, you will get benefit. But look for opportunities where you can improve your listening. When you are in person, where you are in group.